পাইনি তো, না পেলে 2-3 বার করে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, সেই জন্যই whenever you don't get an answer, resend. Okay, we will be working with linear algebra today. Let's see what I have done in the previous session. Okay. ওই ব্যাচে কি হচ্ছে? ভালো জিনিস পড়াবো। ওটা ওই দিনে তো হচ্ছে। আজ ম্যাট্রিক্স আইগেন ভ্যালু আর আইগেন ভেক্টর। EV and EV. Eigen value and vector. Little bit advanced level. So today we are working with respect to this, so very much specialized on this matrix and the structure and all these things we'll be doing. While the session is going on, you can WhatsApp me to this number. Anything. So let's just walk you through some of the specific zones of the matrix. If I just write, because matrix we have done it in 11, 12 and all, a lot of things we have done. So why this matrix is revisiting again? So if I write Aij equal to 0, I not equal to j. Okay. So what is this matrix is actually called? What is the name of this matrix? Aij equal to 0, I not equal to j. One answer is null matrix. I don't know whether it's yes or no. Anyone wants to add anything? Scalar matrix.
diagonal matrix. Okay? So the answer is, in this case, it's a diagonal matrix. The answer is Aij. Aij means 1 1 0 2 2 0 3 3 0. लेकिन I not equal to J बोल रहा है, तो फिर ये क्या कुछ अलग केस है? So in case of diagonals, will it be like 5 6 8 and 0 0 0 0 0 or 5 6 7 8 9 6? Which one is answer? So I am saying that कि भाई मेरा I और J ये अगर इक्वल नहीं है, find I and J, if they are not equal, then I can only say one thing. Is that it's a diagonal matrix? लेकिन एग्जाम में हमें सिर्फ इतना ही मिलता है. Now how this diagonal will become a scalar? Yeah, it becomes a scalar. Scalar जिन लोगों ने आंसर दिया था ठीक है. If A I are equal, means 1 1 2 2 3 3, means this is like 4 4 and 4. Suddenly it becomes a scalar. Okay, so these are very important things. अच्छा मैं अगर ऐसा लिखूं Aij equal to 0 for I not equal to J and Aii equal to 1, then what is this thing? This is an identity. This is simply 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्या था 11 12 में they used to write it in very direct easier way. College first year second year में maths was just like proving things, but now suddenly it has become a little bit of advanced level. Okay, how we can say if Aij, if I just write if Aij equal to 0, if J less than I or J greater than I. What is that thing? No, it's a triangular matrix in this case. So this is the first case. First case क्या है? Upper. And the lower case is a lower triangle. What is a triangular matrix? We know, like 1 2 3 4 and 0 0 0 0 like this. And याद रखिए जहां 0 है उसके हिसाब से नाम नहीं है, जहां पर 0 नहीं है उसके हिसाब से नाम है. So upper triangle and lower triangle, if I draw it, if you see it, then it's okay. But suddenly if you see it in this is the thing in the ISI, this is the thing in the TIFR, this is the thing in every time. So suddenly you see things in this and you get confused. Now I'm going to give you a new name जो आप लोगों ने सुना नहीं. You haven't heard about this name? Tri-diagonal matrix. Heard about this name? सुना? So, क्या है? Super diagonal and matrix diagonal. अच्छा. What is a super diagonal? Perfect. देखिए. हाँ? चलिए बोलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 1 2 3 है मेन डायगोनल. इसके ऊपर भी एक छोटा सा डायगोनल लिखो. ओके, इन केस ऑफ लाइक इन 4 cos 4 और भी कुछ देख सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ सुपर, और नीचे रहा तो सब. तो ये बोल रहा है देख, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स मींस नॉन जीरो वैल्यू, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो वैल्यू तो है, नॉन जीरो वैल्यू ओनली इन प्रिंसिपल, सुपर डायगोनल एंड सब डायगोनल. ठीक है, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा नहीं तो भूल जाएंगे. पूछना आप लोगों को चाहिए, बता मैं रहा हूं.
So give me the example of a super diagonal, a sub diagonal, and a principal diagonal in case of a 5 cross 5 matrix. The 4 cross 6 is the super diagonal of the sub diagonal. And the 4, 6 in the upper side to 1, 2, 3 diagonal. Is a super diagonal or sub diagonal? সেটাই তো বলছি, ওপরে সুপার, নিচে সাব। But what happens in a 5 cross 5? देखो 5 cross 5 मैट्रिक्स में चीजें कहना इतनी भी आसान नहीं होंगी। जैसे A11, A12, A13, A14, A15 इस तरीके से है। लास्ट इज A55, ये है A22, A33, A44, like this. So what you can say? What is the super diagonal? सुपर डायगोनल क्या है? लिख लीजिए। मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट द सुपर एंड दैट, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल ही हमें पता है, ठीक है ना, ये कोना मार दिया हो गया। सो सुपर डायगोनल इज जस्ट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहां पर देखो, अगर एक डायगोनल ऐसे आया तो इसके ऊपर एक और बनता है, फिर और बनता है, फिर और बनता है। सो जस्ट अबव, ये किताबों में नहीं लिखा, सिर्फ अबव लिख के छोड़ दिया। सो जस्ट अबव PD is the edge। तो इसका मतलब मैं अगर कहूं, अगर मैं इसे पूरा ही कर दूं, 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, तो ये अगर है, सो दिस इज व्हाट, अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तो डायगोनल का टेंशन नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? 1 2 3 4 5। सुपर डायगोनल क्या है? 2 3 4 5। सब डायगोनल क्या है? इसके सिर्फ नीचे से जो जा रहा है ये वाला। तो मतलब बाकियों भी सब डायगोनल कहेंगे ऐसा नहीं। देयर इज नो मल्टीपल सब डायगोनल or multiple super diagonals. Clear? Any questions? So is there multiple sub diagonal possible? कौन बताएगा? जैसे principal diagonal cannot be multiple, sub diagonal can also not be multiple or square. But this is in higher mathematics. What happens if I tell you third super diagonal in case of 5 cross 5? Then which position I am pointing at? One बताएगा? See the matrix again. This is the case of a classic case. So किसी का कोई confusion नहीं होगा। So first case is चला गया। Pink one is 2 3 4 5. This is the first super diagonal. Second super diagonal and तो कलर कम पड़ गया रे। 4 5. So now TIFR का एक क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसानी है।
लेकिन मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता. In case of a n cross n, ठीक है? In case of a n cross n matrix, if we need to reach a super diagonal of a single element, then what's the position we have to consider? समझ में आया सवाल? नहीं है. सवाल ही समझ में नहीं आया तो कैसे हो? तो देखो 5 cos 5 में अगर सिंगल वैल्यू में जाना है तो कौन सा सुपर डायगोनल में जाना पड़ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. आप खत्म. तो अगर ये 10 क्रॉस 10 भी हो जाता तो इसी तरीके से होगा. तो n क्रॉस n में काफी लोग क्या करते हैं, n/2 करके बहुत झमेला करते. नहीं, ये 5 हुआ तो इसके ऊपर वाला फोर्थ, थर्ड. So in that case, in a n cross n structure, if I want to reach to this, then how many we have to cross? 5 में से we have to cross 4. That is why we are getting to the 1. So in this case, how many we have to cross? n minus 1. n, Last element is at same. yeah, last element में जाने के लिए how many we have to cross? How many what? Diagonals or super diagonal? Super. Super diagonal. So which superth diagonal will be of single element? देखो फर्स्ट वाला का क्या होगा? First one has how many? This diagonal has n elements. दूसरा first super diagonal has n minus 1 elements. First one. Second one will have n minus 2. Third will have लिख देना व्हाट्सएप करो. फोर्थ वन इज n minus 4. ठीक है. लेकिन how can we guarantee that we reach to a single value? मतलब सिंपल सी बात है, n minus r plus 1 possible cases. Okay, so this is on this basis. Now the biggest thing is that another confusion. Is it possible to have a diagonal in case of a non-square matrix? No, sir. जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स, can I get a diagonal? The principal diagonal, but Now you get the law. Why we need the concept of अभी तक सोचो, till today you only know कि diagonal मतलब है square matrix. Non-square में diagonal थोड़ी ना. But we can get this as a diagonal, 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 and this as a diagonal. So this thing is a very much symmetric structure of diagonals are there. Yes or no? ऊपर 3 नीचे 3. याद रखिए मैट्रिक्स अगर 4 क्रॉस 4 भी हुआ, so 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So in this case the principal diagonal is this 1 2 3 4. ठीक है. नीचे में 1 2 3 1 2 और 1 2 3 4 3 4 और 1. So this is also a perfect symmetry. But the thing is that the perfect symmetry is there and there is a +1. So how many diagonals we get in these kind of cases? If it is a 4 cross 4, कितना diagonal मिला हमें? Sub diagonal ऊपर में 3, the principal diagonal 8 3. So 3 plus 3 plus 1 7. That's the formula here.
4 क्रॉस 4 में 5 क्रॉस 5 में कितना आता? 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 आ गया 5 क्रॉस 5. So you get the formula here into 2 minus 1. So in case of n cross n square matrix, what is the number of total diagonals including the super and sub? That is 2n minus 1. Formula खुद से निकालो, ये कोई किताब में नहीं मिले. But if it is इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? It's called a rectangular matrix. So even a rectangular matrix has diagonals. Okay. अब बोलो सर ये तो आपने ऐसा केस लिया. What happens if I take a bigger case? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही ले लेते हैं. And 4 5 6 7 3 2 8 9 2. अब इसमें क्या होगा सर बताइए? अच्छा थोड़ा सा सुविधा के लिए एक और ले लेंगे. अच्छा नहीं ये इसी को रहता. So in this case or if you need एक और ले लो. So this is the first, this is the second, then this is the third. Then certainly things are not happening in that way, है ना? But still we can get at this cross valuation. This cross, this cross, this cross is happening. इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. और यहाँ पर में as there is no middlemost value to judge, so there is no, this is called a non-centralized matrix. Non-centralized matrix means there is no principal diagonal. It's all about super and subdiagonalism. तो एक M और N matrix में what is the possible number of subdiagonals? If I have a M cross N matrix, how many sub-diagonals I have? It's not a square matrix. कितना sub-diagonal मिलेगा? Again, यहाँ पर में sub-diagonal कितना मिला था? ऊपर वाले के हिसाब से 1 2 3. नीचे में कितना आया था? उसमें भी 3. Like that. In that way, we have the super and sub kind of a thing. So in case it was a 4 cross 3. Okay. So, in case of a 4 cross 3, what is becoming the decider? The value is becoming the decider. Okay. So, in case of M cross N, part of the basic, the maximum possible is M minus 1 and N minus 1. Okay. What happens if you have this matrix? ये तो principal हो गया. 1, एक हो गया super, एक हो गया 2 cross 2 में भी क्या हुआ? 2 minus 1 maximum, 2 minus 1 maximum. So if you take a relatively smaller case, things are easier to work with. Because people focus on a lot of things in matrix, but not on these things. Multiply ये सब आप लोगों को आता है. I will not waste time in transpose. ये वो सब फालतू चीजें नहीं. Symmetric, skew symmetric, Hermitian. अच्छा Hermitian एक बार बोल देते हैं फिर भी. ये है हर्मिटियन 3 minus 4 2 और ये 1 plus I 1 minus I 2 plus I 2 minus I 3 plus I 3 minus I. This is the Hermitian structure. ठीक है. स्क्यू हर्मिटियन में क्या हो जाएगा? ये भी वैसा हो जाएगा 3I 4I 5I. ठीक है. बाकी जैसा चल रहा था चले. Getting the logic? In Hermitian प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी सब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, मतलब 3 2 करके पेयर हो रहा है. देखो इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ इसका पेयर, लेकिन इस बीच वाले को भी अगर ये कर दो. ओके. ये मूवी देखा है किसी ने? ट्रेन टू बुसान नहीं देखा? नौमान तो ट्रेन टू बुसान मूवी जरूर देखो. वेरी नाइस मूवी. It's about zombies. Zombies is like apocalypse में ऐसा हो एक दिन आएगा, like people will become like animals, they will try to eat each other. एक है World War Z भी एक मूवी है, but Train to Busan is one of my favorite Korean movie. I don't like Korean movies much, but anyway, this movie is very nice. तो ये मूवी का एग्जांपल क्यों आ रहा है? So if a zombie beats another zombie, then he will become a zombie. ये है कॉन्सेप्ट. So Train to Busan मूवी में
एक ट्रेन जाता है, उसमें वायरस की वजह से ये 2-3 आदमी को मारने के लिए वायरस जाता है, एंड देन एवरी पीपल स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर वगैरह वगैरह। सो एवरीवन, तो मूवी के एंड में 3 लोग ऑलमोस्ट रात तक रह जाते हैं, जो अभी तक काटा नहीं है किसी ने। ऑब्वियसली द हीरो, फिर एक वुमेन एंड द फीमेल चाइल्ड। He doesn't know that women, वो ट्रेन में मुलाकात हुआ, and there is no love relation। कोरियन मूवी ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन बनना ही है, बच्चा पैदा करना ही है, लिविंग आफ्टर हैप्पीली एवर आफ्टर करना है। इट्स नॉट लाइक कोरियन मूवी स्टाइल। तो ये मूवी में यू सी दीस 3, एंड इवन लास्ट में एक ड्राइवर आता है एंड दैट हीरो को भी काट लेता है। हीरो फिर अपने आप को बचाने नहीं है, फिर उन दोनों मदर एंड चाइल्ड को बचाने के लिए खुद मर जाता है। वेरी बैड एंडिंग, बट एनीवे। So this is like मेरे वो ट्रेन टू बुसान मूवी में मान लो तीनों ही zombie बन चुके। So what happens if like 3 have been left and all are complex numbers, and what happens, all become zombie। अब zombie का कोई restriction नहीं है, ये 3i 4i -5i -3 हो सकता है, दोनों प्लस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? So there is no restriction on this thing। So this is the difference between Hermitian एंड स्क्यू हर्मिटियन। लिखते कैसे हैं? ऐसे, ठीक है। हर्मिट का ये साइन, सो ए थीटा इक्वल टू ए एंड ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, इस हर्मिट एंड स्क्यू, ठीक है। सो मैट्रिक्स सिमेट्रिक is like this, okay, and asymmetry we already। So if I have this matrix, कोई बोल सकता है इसमें क्या होगा, सब मैट्रिक्स क्या होगा? If the matrix is a 10 cross 1 matrix or 1 cross 10 matrix, then what is the number of sub diagonals or super diagonals? 90। हाँ, तो 19। 19। अच्छा, बट सर वो तो नहीं होना। ठीक है, आई डोंट नो, यू टेल मी। कितना रो है यहाँ पर? Column, sorry, row is 1, right? Column is, in this case, row 10 and column is 1. This is very basic level, but nowadays ISI concentrate in this kind of question, so I always do it। पहले बोलो ये केस में कितना सुपर डायगोनल? लेट्स कम टू, सॉरी, सेकंड केस में पहले स्टार्ट कर। 0 सुपर डायगोनल है, सब डायगोनल कितना है? 9 सब डायगोनल। If you take 1 as a value, तो ऐसे 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 करके क्रॉस, any one value you can leave, okay। In case of the reverse, 10 cross 1 में तो उल्टा ही होगा, okay। So in case of a 10 cross 1 matrix, 0 super, 9 sub। In case of 1 into 10, 9 super, 0 sub। That's it। ये सब नहीं मिलता है किताबों में, मैंने भी it's like working and the type of questions have come। क्योंकि देखो most of the cases कोई ऐसा किताब है ही नहीं जो पढ़ने से मैं ISI क्रैक करता हूँ, जिसको पढ़ने से मैं different competitive examination क्रैक करता हूँ। And the competitive examination books भी इसके लिए नहीं आते। Sometimes they only solve some questions, so you have to get your concept to that level which enable you to answer anything। You don't have to wait like a beggar। Okay। Next, another interesting thing। I hope everyone know the basic elementary transformation. There is nothing to say here,
What is the trace of a matrix? Trace क्या है? हाँ, trace Sum of the diagonal elements. हाँ, trace of m equal to sum of diagonals. बस पैकेट में प्रिंसिपल, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं ले सकते. Okay. In many of the cases, this matrices जो चीज रहता है, matrix can play with your mind also. What do you mean by a zero row? Zero row means कोई भी एक वैल्यू जीरो होने से नहीं होगा, all zero. तो नॉन जीरो मतलब कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो होने से हो जाएगा. Always remember that the rank of a matrix A and rank of a matrix B minus n is less than equal to rank of their product less than equal to minimum of A or rank of B में से जो minimum है. So very important. तो n क्या है? n equal to order of the square matrix. मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है. अब nullity क्या है? Nullity of a matrix, rank nullity is very important. Nullity of a matrix is m cross n matrix is there and rank equal to r. तो n minus r हो गया nullity. देखो n is this value, r equal to rank. तो मतलब रो फर्क ही नहीं पड़ता. Row into column. So my answer is column minus rank. That's it. तो निकालते एक नलिटी, एक छोटा सा आंसर देखिए. First, try to find the rank of this matrix. We'll try to find it. The easiest way can do the row and column operation. ठीक है? तो R2 minus R1 कर लेते हैं. 1 2 3. R2 minus R1 करने से 0. 4 minus 2 is 2. And this is minus 1. R3 minus R1 से 0 2 minus 1. अब दो आइडेंटिकल रो होने का मतलब क्या है? ये दोनों पूरा उड़ जाएगा. So the rank of the matrix is what? फिर करेंगे R3 minus R2. अगर नहीं समझ में कर देता हूँ, कोई बात नहीं. 0 0 0. So rank equal to non-zero rows मतलब 2. एक और इसका सीधा डिटरमिनेंट निकालिए. इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग विल बिकम 0. 0 होने का मतलब ये रैंक 2 आ जाएगा. ओके, तो नल क्या हो? इक्वल टू 3 क्रॉस 3 था, तो मतलब वो 3 है, माइनस द रैंक 2, तो नलिटी इक्वल टू 1. दैट्स इट. सो नलिटी कैन बी 0. कैन नलिटी बी 0? इनवर्टेबल मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स में ये 3 हो रहा है ना, एंड रैंक इटसेल्फ इज 3. अब नलिटी 0 ना. जैसे एक ऐसा nullity is equal to 0 for all matrices whose determinant value for n cross n, determinant value for n cross n not equal to 0. That's so good. Remember that this higher level mathematics is more generalized. It's not a specific, you do a sum only, but the concepts are very much generalized in nature. Now something interesting.
अब आएगा सबसे भयंकर चीज जिससे हम लोग हमेशा दूर भागते हैं, ए एम एंड जी एम। वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है ये? एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं, algebraic multiplicity and geometric multiplicity. Okay. तो पहले मैं एक मैट्रिक्स से आपको समझाता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस यू हैव डन इन योर नॉर्मल डेज। तो कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से लैम्डा माइनस करेंगे, जो इक्वेशन आएगा वही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर 2x2 मैट्रिक्स एक फॉर्मूला लिख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा plus determinant of A. This is the direct CE of the matrix. तो भाई सर 3x3 में क्या होगा? What if it's a C? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A into lambda square plus trace of adjoint of the matrix A into lambda minus determinant of equal to the characteristic equal to 0 नहीं है। So this is the characteristic polynomial. This is very important. अच्छा मान लो this came as an ISI interview. क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू ax माइनस लैम्डा 1 होल टू द पावर k1, x माइनस लैम्डा 2 होल टू द पावर k2, x माइनस लैम्डा k होल टू द पावर मे बी kr, लैम्डा r kr। ठीक है, ये क्या है? इफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आपको निकालना है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर्मूला डायरेक्ट है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज लैम्डा 1 k1 समेशन ऑफ दिस। मतलब सीधी सी लैम्डा 1 k1 lambda 2 k2 dot 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 lambda r k. This is a big derivation. कोई जरूरत नहीं। No, actually on this basis the question came. The question was given as x minus 3 whole to the power 5, then x minus 7 whole to the power 12. এরকম ভাবে দিয়ে x minus 9 whole to the power 3 and x minus 555 whole to the power 2 in this way. Okay, like these values are given. What is the trace of the given matrix? So what is the trace? 15 plus 84 plus 27 plus 100. That's it. So if you don't know the formula here, okay, so in this kind of level, this is not about formula derivation. आज तक कभी नहीं आया ना तो कभी आएगा। ID jam, it cannot give anyway. Okay, TIFR, ASO, all कोई भी examinations, CUET, so we haven't seen any derivation. MCQ वाले में भी नहीं, subjective वाले में भी, but the applications are here. Algebraic multiplicity ध्यान से समझिए। पहले an. Algebraic multiplicity happens with respect to eigen value के हिसाब से। मान लेते हैं eigen value है lambda, ठीक है?
इसे हम लोग लेंगे am इक्वल टू रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर स्क्वायर केस। आंसर क्या है? 3203, ठीक है। इसे हम लोग अगर लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा, ये इक्वल टू 0 होगा। सॉल्व करने से क्या होगा? 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। सो लैम्डा क्या है? 3,3। तो एल्जेब्रिक मल्टी मतलब एक वैल्यू कितना बड़ा? तो अगर मान लो n क्रॉस मान लो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स में लैम्डा कुछ ऐसा है 1 2 2 3 एंड 4, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ the value 2 is 2. The algebraic multiplicity in this case is 2. लेकिन इतना आसानी से भी आप लोगों को हाँ नहीं बोलना चाहिए। ध्यान से देखिए, what if in a matrix the eigenvalues are 1 2 2 3 3, ठीक है। Then in this case what is the algebraic multiplicity? One, two, two, three, three. What? What? हाँ, तो मैं लिखता हूं, इसे ऐसे लिख, that's it. So algebraic multiplicity is not decided on a whole. तो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, what is the algebraic multiplicity? तो algebraic multiplicity by default is 1 if all values are different, है ना। फिर एक सवाल आ सकता है, what happens if it is 1 2 2 3 3 3 upward? Who can tell me? So basic algebraic multiplicity of 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3. लेकिन एक आंसर अगर मुझे चाहिए, then what I can say? और शायद एक आंसर होता ही नहीं. So I'm rephrasing my question. So if only ask in the question that the algebraic multiplicity find it, so shall I go for the highest frequency of any given eigenvalue? Because in this case 3 is coming 3 times. So isn't it the decider algebraic multiplicity, or there is no specific algebraic multiplicity rule in case of this matrix? Algebraic multiplicity will depend on identity. नहीं, मान लो ओवरऑल मैट्रिक्स का कोई algebraic multiplicity मुझे चाहिए तो कुछ मिल सकता है क्या? Perfect. So the definition of algebraic multiplicity is completely dependent on every eigenvalue. तो अगर मान लो कभी कभार ये सब केसेस में लोग एम 3 लिख के छोड़ देते, क्योंकि सर ये 3 3 बार है, 4 बार आता तो ये 4 लिख के छोड़ देंगे।
but AM of 3 is 4. It is eigenvalue specific idea. Yeah? तो होल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की तरह एक वैल्यू बता दो, वो नहीं हो सकता. ओके, and you cannot add it. For example, it's like a person has 3 daughters, all of them got married, and everyone has different number of children, 0, 1, and 4. So in this case, 0 is not a possibility. Algebraic multiplicity minimum, you have to be like anyone. So if every girl got married and everyone has at least 1 children, then the algebraic multiplicity says that first girl has 1, second girl has 2, third girl has 5, like that. So we cannot say what is the average number of. So it's like says 5 plus 2 plus 1, if you do an average and the answer is 2. So everyone is having 2 children. So here averaging is not it. If I say all of my daughters got 2 children on an average, answer is no. Clear? अब आएंगे आइगन वेक्टर्स के साथ साथ. आइगन वेक्टर इज वेरी इजी. I forgot the geometric multiplicity. तो geometric multiplicity भी एक आइगन वैल्यू के हिसाब से आता है, जिसमें आता है इसका डायमेंशन इन द स्पेस. भाई ये कैसे होगा सर, ये तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत टफ लग रहा है. हाँ है, टफ है थोड़ा सा. 3 2 0 3 ये अपना मैट्रिक्स है. अब मान लो आइगन वेक्टर निकाला है, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 हम लोगों ने निकाला. तो पुट लैम्डा इक्वल टू 3 इन दिस लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इक्वल टू 0 स्ट्रक्चर में डालना है. to 0 0 x y 0 0. तो क्या आएगा, माइनस 2y equal to 0, y equal to 0. So x is a free variable. Let us take x equal to 1. You can take anything, x तो है ही नहीं. So 1 comma 0 or 2 comma 0 or maybe n comma 0 is a linearly independent vector. For lambda equal to 3. तो आइगन स्पेस क्या है, 1 comma 0, that is eigen space. This is the thing, or n comma 0 in this case. So geometric multiplicity of lambda equal to 3 is 1, and 1 is for this one. And obviously you haven't got anything. पूरा नहीं है, थोड़ा सा आया, फिर बीच में थोड़ा लटक गया. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढ के निकाला. ये बुकिश वे है और ये नॉन बुकिश वे है, शॉर्टकट. ये क्या है, द बेस्ट वे टू फाइंड इट, ये किताबों में नहीं मिलेगा. पहले a माइनस लैम्डा आई इस मैट्रिक्स का नलिटी निकाल. ठीक है, स्टेप 1. Then GM of lambda equal to nullity of A minus lambda I. तो और भी फॉर्मूला को आसान बनाते, n माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो इसमें एक चीज देखा गया कि GM is less than equal to AM, यहाँ भी है, जैसे AM GM में भी है, यहाँ भी है. It is not possible for geometric multiplicity to go above algebraic multiplicity. अरे 3 रो होता है, आइदर 3 रो मिलेगा या फिर उससे कम रो आएगा. रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. रो के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, और algebraic multiplicity maximum is the number of rows.
So obviously geometric multiplicity or algebraic multiplicity can be same, but cannot be more than. Very specific kind of concepts. Some आज शायद एक भी नहीं हुआ है, लेकिन this is like very gem of a concept, especially these time. ये तो एकदम भयंकर. So nowadays we are seeing that the tendency of giving the questions on the basis of those areas which are relatively commonplace has increased many times. तो मतलब रीमान इंटीग्रल से ही आएगा ये मत सोचिए. It may not come from Riemann. Riemann is a tough type of integration. Okay, पक्का नहीं है भी नहीं, जैसे जैम में सिलेबस में नहीं है, but still it comes. So my point is the concentration would be not on gathering the best of the hardest of the question, but working with respect to the hardest of the concepts. Okay, that's it for today.